you have a question, right? At constant. Okay. Apart from that, any question? So while we are using Panda reporting, Panda's profile report, it is showing that not any package available in your Python. Hello. Hello. Can you hear me now? Yes, sir. Yeah. Tell me, what question were you asking? Sir, while we are using Panda's profile report, Mm-hmm. it is not showing in the my Python. What is the error? No package is available. No package is available. No package is available, or is it saying no package called pandas profiling available? Same, yes, sir. Yeah. So what does it mean? Panda package is not available, I think. So what do you need to do? Import the Panda Install. package. You need to install first, right? Okay. So I had installed using the pip. That installation has probably not happened, right? So Okay. that's why you are getting this error. Okay. So make sure that you install pandas profiling before you import it. Okay, sir. Yeah. Okay. Yes. Anything else? So one question. Yeah, sure. Tell me. Can we use pair plot to draw scatter plot between only y and all x rather than doing for all the variables? No, pair plot will get the plots for all possible pairs. So you cannot specify only between y and all the x's. It will give you the plot for all possible pairs. Okay. And so the second question, I'm not able to use sklearn.cross validation. It says no module named sklearn.cross validation available. Can you try with sklearn.model selection? Hello. So what is the difference for using the cross validation and the model selection? No difference. In certain versions, the cross validation is not there, model selection is there. The rest of the commands remain exactly the same. But sir, the syntax is different. Model selection having only two ones, trains and a test. But here we are using the 4 parameters. Within model selection also, you will have this train test split data function, yes, which you can use similarly. In the model selection 4.1, train test x4, x and y both. You can do exactly the same thing that I'm doing here. Just replace cross validation with model selection. So this model underscore selection in Python 3.7 is working. Yeah. So see, if you look at this, right? So whenever I use cross validation, just look at what message this Python is telling me, right? So these warnings actually mean something. So it says that this module was deprecated in version 0.18 in favor of model selection. Right? Okay. So model selection is the newer version of cross validation. So if cross validation does not work, it basically means you have a later version than me. In the later version, it got deprecated, right? So that's what this message is saying. Okay. So instead of, if cross validation is not working, just replace the cross validation with model selection. Everything else remains exactly the same. Okay, sir, and one more question. Yeah, hello. Yeah. Sir, my question is related to this file, but if you will go above, we have used one place car underscore sales underscore num is equals to car underscore sales underscore get underscore numeric data. Although we have done the same thing in ABAP, so what is the difference between those? I mean, sorry, I have done what? Sorry, I did not understand. एक बार सर आप यहाँ पे ना? Yes sir, यहाँ से नीचे यहाँ पे सर कन्वर्ट हमने कर लिया और जो भी फ्लोट में था और ऑब्जेक्ट था उसको हमने कैटेगराइज कर किया कुछ भी हमने बस सेपरेट सॉरी कैटेगराइज सेपरेट किया कैटेगराइज कर लिया एंड बिलो दैट सर कैन यू
और नीचे से बॉटम ऑफ दैट सर। सर एक क्वेश्चन यहाँ भी है सर, यहाँ पे हमने जो ये यहीं पे कैट समरी जो हमने फंक्शन बनाया, बेसिकली यहाँ पे हम लोग कैटेगरिकल डेटा को ट्रीट कर रहे हैं, ट्रीट नहीं कर रहे हैं, एनालाइज। हाँ एनालाइज कर रहे हैं जो भी मिसिंग वैल्यू है और उसको रिप्लेस करने के लिए। तो यहाँ पे सर एक बार आप नीचे करेंगे, यहाँ पे हमने कैट समरी रन किया तो यहाँ हमें 0 मिला है कि हमारा कोई मिस वैल्यू नहीं है, 0 0 0 और उसके अगेंस्ट, करेक्ट। और सर आप नीचे और जाएंगे तो जब हम लोग प्रोफाइलिंग यूज करते हैं वहाँ पे आ रहा है कि 1.9%, मतलब जब हमने प्रोफाइलिंग यूज किया था 1.9% जो है वो मिसिंग वैल्यू था। तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक में मिसिंग था सारे के सारे? हाँ, वो बता भी रहा था ना कि कौन से वेरिएबल्स में मिसिंग है, उसमें सारे न्यूमेरिक वेरिएबल्स ही थे ना। वो क्या pandas प्रोफाइलिंग में इट विल टेल यू व्हिच वेरिएबल हैज द मिसिंग वैल्यूज। इफ यू लुक एट द नेम्स, the names are all of numeric variables. So जैसे यहाँ पे इन्होंने 1.9% बताया ना, Right. if you go down it is actually telling you कि वो 1.9% is due to 3 variables. One is carb weight, fuel efficiency and year resale value. Okay. बाकी सारे में मिसिंग वैल्यू नहीं है। सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमने जो मिसिंग वैल्यू ट्रीट किया है वो सिर्फ सेल्स इन थाउजेंड्स के लिए ही ट्रीट किया है। नहीं तो क्या देखिए, मिसिंग वैल्यू मैंने सेल्स इन थाउजेंड्स के लिए नहीं ट्रीट किया है। इफ यू लुक एट द फंक्शन, जो फंक्शन है मिसिंग इम्प्यूटेशन, आई एक्चुअली रैन इट ऑन द फुल डेटा सेट। ओके ये मैंने अप्लाई पूरे डेटा सेट पे। मेथड 2 में आपने कर दिया, मेथड 1 में 1 बाय 1 बताया था, मेथड 2 हाँ, तो 1 by 1 करना is the only reason that I'm showing this is just to make a point that this is redundant to do, right? We should actually apply a function. Understand. जब सर कैटेगरिकल डेटा के लिए हम लोग ट्रीट कर रहे हैं तो व्हाट आई हैव सीन, आपने कार मॉडल बॉटम में आएंगे सर जहाँ पे कैटेगरिकल डेटा को ट्रीट कर यहाँ पे सर हमने सिर्फ वेक्टर टाइप और 2 डेटा को हमने बेसिकली ट्रीट किया है, जबकि एक वैल्यू ऑब्जेक्ट और है व्हिच इज लेटेस्ट लॉन्च, और वो भी ऑब्जेक्ट ही है, उसका भी टाइप ऑब्जेक्ट भी है। तो व्हाई हैवंट वी ट्रीटेड लेटेस्ट लॉन्च? तो आप अगर यहाँ पे देखोगे, राइट, यहाँ पे क्या बता रहा है? अच्छा सारे डिस्टिंक्ट हैं तो we don't have to. Similarly for model भी is an object variable, right? Right. तो ये दोनों को हम नहीं यूज करेंगे ना, because they have very high cardinality. Okay. That's right. Good. So one more question. Yeah. So you said at times we have to learn linear regression in Excel. So from the interview perspective, do we need to be prepared to run all these assumptions as well? No, in Excel you cannot verify these assumptions. Okay. In Excel you cannot verify the assumptions. The assumptions can only be verified. I mean, you can. You will have to write the functions to do all of that. There is no direct function that will verify the assumptions. Assumptions are usually verified in Python. Okay. Or in any other programming language. Got it. Sir, in the Durbin version, did there any have? Sir, in the Durbin version, did there any have a threshold value? 2. So I think we discussed this, right? Plus minus 10%. So if the value is between 2.2 and 1.8, that's fine. Sorry? If the Durbin-Watson statistic value is between 1.8 and 2.2, it is fine. If it is greater than 2.2, then what would we do? Then there is autocorrelation. Similarly, if it is less than 1.8, then also we will say there is autocorrelation. Okay. Usually we take plus minus 10%. So 2 is the benchmark value, plus 10% is 2.2, minus 10% is 1.8. Okay. And sir, let us assume there we have a 3 variables for x and the y. The 3 variables is the continuous.
and the Y has a categorical. So how to define how to find the correlation between them? Okay. So linear regression. So let's go back to the basic business case, right? Linear regression. Is it unsupervised or supervised? Supervisor. Okay. Now within supervised, linear regression is for regression or classification? The linear regression. No, linear regression is used to work on regression problems or classification problems. Regression, sir. Regression problem. Now, if a problem is regression, when do we say a problem is a regression problem? When it is supervised. No. Both regression and classifications are supervised, right? Yes. When we say that a problem is a regression problem, When it is continuous. which is continuous? X is continuous. No. When Y is continuous, Okay. right? So obviously, if Y is continuous, it cannot be categorical. So regression problem is only there if Y is continuous. If it is categorical, it becomes a classification problem. So then you will have a different set of techniques to work on. So, sir, how to find the correlation between them? If the both is the like X is having a continuous and the Y is the categorical. So when we work on a classification, then we will discuss this. Okay. We'll discuss. Sir, I have sent you a code on chat box. Can you let me know? I mean, what exactly we are doing here? I couldn't able to get it. Sure. So can you tell me where this code is? Let me search for this code, right? Line number I can. No, line number will be different. So let me search. That's why I haven't. Okay. Yeah. So what this is doing is, so it is iterating over. Yeah. So what I am trying to do here is, often you see things like, say, gender, right? Okay. If you have a variable called gender is often represented by numbers, 0 and 1, right? Right. So what will happen is, when you read it from a CSV file, gender will be read as a float or a integer, right? Right. But that is not a integral value, right? That is actually a categorical variable. Right. So what we are trying to do here is, we are trying to make sure that whatever variable list that I have passed, I am forcefully converting every one of them to a categorical variable. Okay. Because create dummies can only work on categorical variable. So if I have gender which is numerical, if I write create dummies, it will throw me an error. So I'm basically forcefully converting everything into categorical type and then applying the dummy creation. Okay. Right? Because you understand, in certain scenarios, some categorical variables might have numeric values. Right. That's. Sir, on the place of creating dummies, we can use how to use the one-hot encoding method. So dummy is one-hot encoding. So did there any code different from the dummies for the one-hot encoding, sir? No, you understand that. So you have a name which you write in your Aadhaar card, and you have a name by which your mother calls you, right? Yes. It's very basically similar. One-hot encoding is the scientific name. Dummies is what people usually say. Okay, both. Yes, the same thing. And so one more question: can you please show the regression again in the Excel? Because while we are doing that in the Excel, it is showing some error. LAN 0 is having a. Yeah. So did you remove missing values? No, sir. So you need to remove. In Excel, you cannot have missing values while running the regression. Okay. Anything else? Anything else? Yes, Pranil, profiling, it gives us rejection for multicollinearity, right, between two variables. So should we reject those variables, or should we reject on the basis of VIF only? Yeah, you will not reject any variable based on profiling. You will do a VIF
Because you see, profiling tells you two variables are rejected. Now, which variable will you drop? You cannot drop both of them, right? You know, decide which one to drop. VIF tells you that. Whichever of these two will have a VIF greater than 10 or the higher VIF, you will drop that. Okay, So and dropping, automation part, we haven't done that. We have to do it on our own, right? Based on yeah. So I just told you how you can do it. You need to write the loop for it. Yeah. okay, and the one that you have discussed for good model, bad model, the function you have used, I forgot, sklearn, and for that, we have seen that. What we did was we only calculated the MSE, right? From sklearn dot metrics, I imported the mean squared error. I calculated the MSE on the training data. I calculated the MSE on the testing data. And since the training data MSE was lower than the testing data MSE, I told that the model is overfitting. Sir, while we calculating for the train and the test predictions, we say that the MSC is in this range, then model is overfitted. For the underfit and optional, we can say something like predictions over there for the values. Sorry, for the underfitted what? Sir, for the underfit and the optional models, we can say anything for except this. We had covered the sir recent example for the one model. I was talking about overfitting yesterday, right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Did we cover for the other models? What do you Optional mean? and the underfit. Sir, underfit and optional for the MSC values. What are the values range for the? Underfitting and overfitting are opposite, right? A Yes. model can either be underfitting or overfitting. In our case, it was overfitting. So I pointed that out. If we see a case where I see a underfitted model, I will point it out. Okay. And to avoid overfitting, we will start eliminating the variables that have a lower beta value, absolute value of beta. Lower absolute beta, yes. So you first remove the variable, which is the, so basically what you do is, if your model is overfitting, you check the VIF, right? That is the first thing. And remove all variables with VIF greater than 10. Then again, check whether it is still overfitting. If it is still overfitting, then start eliminating variables based on their absolute beta values. And will it be iterations or directly all the No, one? it will be iteration. So you remove one variable, again check, remove another, again check, and so on. Yeah, thank you so much. Okay. Anything else? Yes, add constant. Now, in statsmodel.api, there is an option called add underscore constant, right? If you do not do that, what happens is your model is built without an intercept, right? If you want an intercept in your model, what you do is you write statsmodel.add underscore constant train underscore x. What this will do is, so for example, let's look at train underscore x first. Yeah. If you look at train underscore x, this has all the variables that you want to build the regression on, right? Now, if I run this, a column is added which has all the values as 1. So if I run this and then look at the head, you will see at the end a column has been added. Or where did it go? Let me run this again. Okay. I guess SM add constant is not wrong. Sorry? No, 1 second. ये रन नहीं हो रहा है क्या?
ये कोड नहीं है ब्रिडल, Sorry. वो कुछ और सेलेक्ट है ऊपर से. Actually, it is markdown, I think. It's not about. अच्छा एक सेकंड. अच्छा मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम. एक्चुअली मैंने stats model dot formula API नीचे रन किया है ना. That also I've assigned as SM. तो वो उसको पढ़ रहा है. So I need to run this first. Yeah. Now if I run this, this is the normal head. If I run add constant, and then if I run a head, This, if you look at the option above, this head is a raw and BT convert. sorry, what? Train x dot head value has the run underscore NBT convert type, I think. Any head में there is no problem. Let me check one thing. ये add क्यों नहीं कर रहा है? Okay. वो ऐड इसलिए नहीं कर रहा, वो कोड रन ही नहीं हुआ ब्रिडल. It's actually kind of markdown, not code. Raw and BT. Oh, yeah. Okay, sorry. My bad. So I have to convert this to code. Achha, sorry. Yeah. Now if I run this, yeah, this hopefully should work. First में आया ना? हाँ. तो ये constant add कर देता है. So what happens is, so if you think of it, an intercept is nothing but a beta value for a variable which only takes one as a value, right? So this is how you can build in the intercept. If you do not want the intercept, you do not need to run this. Okay, yes. Anything else? Which one? SM is statsModel.api, right? Within that, there is a function called OLS. OLS builds what? Ordinary least square model, right? Which is linear regression model. It takes two things as input, your Y and X, right? And dot fit, what it does is, if I do not do a dot fit, it is just creating a OLS object. So if you check the type of LM, it's a OLS object. The model will only be built, and this is true for all algorithms, right? A model is actually only built if you write a dot fit on it. Fit means it will actually go into the data, the training data, and estimate the betas. Otherwise, it just creates the object and stops there. There is no equation. The equation is only built if you write a dot fit on it. Sorry, sir, I didn't get this part dot fit. Can you please explain it again? Excel equivalent will be, say, for example, yeah, so this is the Excel data, right? So ideally, if you want to build a model, what do? You go to data analysis and then select regression. Yes. Yeah? And then you select, let's say, what is my Y? My Y is this, right? Cells in thousands. And then you select X. Let's say I want a univariate equation for now, right? So let's say I will select this X, right? If I do not do a dot fit, it's as if after selecting this, I am stopping here. I am not pressing this OK, right? As soon as I write dot fit and press shift enter, this OK is actually pressed and the beta values are calculated. Right now, there is no beta value that is calculated, right? Okay, got it. On the training data. No. We are not providing anything. We are providing the Y and the X. No. That is if you want to use the solver. If you want to use the solver, you have to give a starting point to the solver.
उसके बाद वो खुद फाइंड करता है बीटा क्या होना चाहिए। पर ये मॉड्यूल आप अगर यूज करते हो, यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट y एंड x एंड देन प्रेस ओके, राइट? फिर रिग्रेशन मॉडल बनता है ना? तो if I just stop after defining this, right, and do not write a dot fit, it's as if I am stopping after just selecting y and x, right? As soon as I do a dot fit, it's basically like pressing this OK button, where the equation is actually built. In the Excel regression, for giving the x and the y values, did there any limitation that x would be smaller than the y or the y would be smaller than the x? What do you smaller as in? Sorry? Smaller as in what? Smaller in quantity? Like we are selecting the one column y and the x we are selecting the 3. Y will always be 1. Y will always be a single variable. Okay. You cannot like, have, then all of you understand that, right? Y will always be one variable. X can be hundreds of variables. Okay. So, I mean, if you go back to the class where we discussed how a linear regression looks like, a linear regression looks like y is equal to certain beta 0 plus beta 1 into x1 x, yes. plus dot dot dot, right? In yes. this case, there is one y, right? Yes. There is no y1, y2, y3. X yes. can be many variables. Okay. Anything else? Anything else on this? Mm-hmm. No. So what is train X? Train X is this whole data, right? Where all the X's are there. Train X is the name of the data frame, which has all the X variables. One has only one variable. Second has all the X variables. Yes. Anything else? If we are using the method 1, then this add constant, do we apply it to test x as well? Yes, you need to apply it to X as well, test X as well, yes. Okay. Yes, anything else? Okay, now moving on with what we had left. So far what we have done is, we have built the equation, right? We have tested for normality of y. We have tested for linear relation between x and y. We have tested this, right? Third is, what else have we tested? Yeah, we have tested for multicollinearity. Okay. We have tested for autocorrelation. The only thing that is left to be tested is heteroscedasticity. And we also have not got a normality of residuals, right? So these two things are left, right? So we will now work on these two. So can we say that multicollinearity is equals to correlation? Multicollinearity is not exactly equal to correlation. Correlation is a one-to-one relationship, right? Yes. Multicollinearity might be one to many. Yeah. Okay. So one X might be dependent on many X variables, right? It's not necessarily that it will only depend on another X variable. Right? Say for example, your income depends on both your age as well as your educational qualification, right? It is not only dependent on age. Yes. Makes sense? Multicollinearity therefore is not only correlation. Correlation is one of the measures, but not a good measure at it, right?
VIF is the actual measure that you should look at. Sir, if in an interview, if the interviewer asks about the difference between the multicollinearity and the correlation. Yeah, correlation is collinearity between two variables. Multi can be more than two, right? Sorry, sir, could you please repeat? Correlation is the relationship between two numeric variables, right? Yes. Whereas multicollinearity might be relationship between multiple numeric variables with another. It could be between the one categorical and one numerical. It could be. No, multicollinearity we typically test with only numeric variables. Although it only perform with the numerical, not on the categorical. Right. Okay. Sir, we have already checked the normality of Y. So do we still need to check normality for residuals? Not really, but I will show you how to get the QQ plot, right? Okay. Yeah. I mean, out of these two, if you check for one, the other one is only also verified, right? But anyways, I will show you how do you get the QQ plot. Now, to get the QQ plot and to basically look at heteroscedasticity as well, you need to calculate the residuals first, right? Now, how do you get the residuals? You will get the residuals by using a model and predicting the values for it, right? So first you need to get predicted, right? So how do you get predicted? You use, so for example, what is the name of the model? Let's say, what was the name of the model? LM, right? OLS. No. I had given a name, right? OLS is the function. So what you do is you write y underscore predicted as lm dot predict train underscore x. Yeah, so this gives me the predicted values, right? Now, what is residual? Residual is actual minus predicted. So my actual is in train underscore y, right? It has the actual y's. So what I'll do is I'll just subtract them. So this is my predicted y. So I subtract my predicted y from the training y to get the residuals. So if I run this, this gives me the residuals. These are the residuals, right? Now, after you have got the residual, then what you need to do is, the first thing that we'll do is we'll look at heteroscedasticity. What is heteroscedasticity, or how do we verify heteroscedasticity? By plotting a scatter plot between y and residuals. So this is my y, this is my residual. How do I get a scatter plot? SNS dot joint plot, right? So if you write SNS dot joint plot train y comma residuals, you get this scatter plot, right? So this is x and this is residual, right? So if you look at this, do you think there is heteroscedasticity present? Not drastic, right? There is no proper funnel which is coming out, right? Not drastic. So for now, we can assume that there is no heteroscedasticity that is present. Sir, how you know? So because let me show you a case where I suspect heteroscedasticity. So then you will basically see the difference. Yeah. Sorry. Yeah, it's there. I'll show you. You see the variation here, and see the variation here, right? Now, let's compare this
with the plot that we have got? Do you see any such variation? Most of the points are concentrated here, right? And if you take this as the spread, when most of the points are within this spread, here the points were expanding. Okay. I mean, see, this is not a very objective way to do it. It's subjective, right? But having said that, does it markedly saying that there is drastic difference? No. So we will assume there is no heteroscedasticity. Yeah. Funnel shape can be concave or convex on both the sides. See, if it is concave or convex, it basically means the variation is changing. Why do we talk about funnel? A funnel, if you look at a funnel, the spread here is different from the spread here. Now the funnel can be facing either that side, it can also be facing this side. In both the cases, the spread is different. It can be any way. It can be any way. I mean, it can be either be from larger to smaller values or smaller to larger values, whatever. So we assume that there is no significant heteroscedasticity. Now, the next thing that we will do is, what is the next thing that we need to verify? Only one thing left, normality of the residuals. It can be done in two ways. Either you get a QQ plot, or you can also look at the histogram of the residuals. So what I first do is, I do a dist plot. Dist plot does what? Histogram. So if you run this, it gives you a histogram, and if you look at the residuals, it's like almost normal, right? But just to verify, what you can also do is, you can get a QQ plot. Now, how do we get a QQ plot? So QQ plot, in order to plot this, you need to import from SciPy the stats module, stats function, right? We need to also import PyLab. Right? These are the two things that you need to import. And then what you just need to do is, you need to pass on the residuals inside, and you need to verify which distribution are you comparing it against. See, QQ plot can be used to compare against any distribution, right? What does it do? It basically compares your percentiles versus that distribution's percentile. Right? It can be done for any distribution. We are particularly interested in normal, right? So we write here normal, we pass on the residuals, and then if you run this plot, sorry, okay, what did I delete? One second. Okay. Sir, I think space between dot and No, residuals is there should be a function in stats, right? The function will be, So it is a prop plot. yeah, prop plot. Yeah. So you see, I did not remember the function, right? So
I thought prop plot might be a 1, so I just did a question mark, and it says that it calculates quantiles for a probability plot. Right? So I'll probably try out this. Yeah. So this is the way you can get a QQ plot. In the QQ plot, you see majority of the points are on the 45-degree line, which basically indicates that distribution of the residuals are very close to normal. Make sense? Cool. So we have basically verified all the assumptions. Now, once all the assumptions have been verified, the end product is basically a linear equation, right? That is the end product. Now this, so remember what were the business questions that we were trying to solve? What drives my sales? Question? What drives? No, what was the first business question? What was the first business question? Which factor drive the sales? Predict Y, right? Okay. Now, once you have built the equation, how do you predict Y? Model name dot predict, and within that you pass the value of the X, right? This is how you predict. Okay. Now, what was the second business question? Drivers, right? Yes. Drivers, right? How do you get the drivers? A beta. So once you have, let's assume that you have a significant model, right? So what do? You write LM. LM is the name of the model. And if you just need the beta values, sorry, if you just need the beta values, there is a method in linear models which gives you that, right? So if I write LM dot, this gives me list of all the functions, all the methods available, right? Now, if I, okay, this list does not work for me properly, so I will do a dir LM, right? So I don't know which function gives me that, right? So I will basically look at this and figure out which function gives me this. I am looking for the beta values, right? So tell me out of this, which one do you think will give you the beta values? Which one do you think will give you the beta values? I think. Yeah, which one? Params. I think params, right? So let's test for params. So if I write lm dot params, this gives me all the beta values, right? So once I have the beta values, what do I need to do? So if you check the type, this will be a series. So what do we need to first do? Get the absolute values. Absolute values. The absolute values. Then what you do? Sorting. We will do the sort. Let's see. Okay. So X is equal to this. Now X dot sort values, right? And I need it in a descending order. So I'll write ascending equal to false. Make sense? So I'll write. By default, it is always true. I need descending, right? So that's why. Equal to false. Now, this tells me that the most important variable is manufacturer. Because you see, most of the manufacturers are coming above, which makes sense also, no? Your car price is highly driven by the manufacturer. है ना? So Maruti sedan costs very different from a Mercedes sedan. You know? So
car manufacturer is the highest driver, followed by weight, right? Followed by engine size, followed by fuel efficiency, fuel capacity, wheelbase, price, and so on. I don't know why price is so low. Price should actually go up, but whatever. Based on the data, this is what you have. Right? Do you understand what I'm trying to do? Now, if the business asks you, what should I do so that my car sales go up, right? What is your recommendation? Your recommendation will be, you are working for a car dealer, right? Your recommendation will be purchase more cars from Jeep, right? Second recommendation will be probably have purchase cars which have large engines. Yeah. Yeah, I mean, probably purchase heavier cars which have large engines, and so on, right? So you basically can give them action points. Right? Sir, when we build our model, we Yeah. get p-value is very insignificant for most of the variables. Yeah, okay. While interpreting this, I'm assuming p-value for all of them is less than 5%. That you have to ensure before. Okay. Right? I'm assuming that p-value is less than 5%. We talked about this yesterday, right? You need to run those iterations and get all the p-values significant. Okay, understood. If all the p-values are significant, then this is how you interpret, right? All the p-values have to be significant. So we understand how to get the drivers. Now, what was the next business case? Drivers, but then we also have the importance, right? We also can tell which variable is more important, which variable is less important. Right? Then it was explanation of individual predictions, right? You need to give reasons for each and every individual observation. How did you give those reasons? Beta into x, right? So that there is no way to calculate here. What you just need to do is, you have these betas with you, right? For each observation, calculate beta into x. You need to write a code for it. There is no straight way of doing it. You have to write a code such that for each observation, so your code will look something like this. I mean, the output will look something like this. Say this is your predicted y, right? Now, this predicted y is coming out from an equation. The equation is y is equal to, let's say, 1000 plus 10 into x1 plus 20 into x2, right? Let's say this is the equation. Then for each predicted y, you have a contribution of x1, you have a contribution of x2. How do you get that? Simple. You just need to calculate 10 into x1 for each observation. You need to calculate 10 into x2 for each observation. Make sense? Once you do that, for each prediction, you have reasons. The reason will be what? You need to calculate the maximum value. If you are giving the top reason, it will be the maximum value, right? So if the total predicted is, let's say, 1100, right? 1000 is coming from the intercept, 100 is coming, 70 is coming from x1, 30 is coming from x2. So you need to identify out of these two factors for each observation which is the contributor, right? Maybe for another observation, the predictor is 1200, where the extra 200, 100 is, say 90 is coming from here and 110 is coming for it. So in the first case, x1 is the highest contributor. In the second case, x2 is the highest contributor. Make sense? ये कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, ये टोटल जो प्रेडिक्शन है उसमें से 1000 आ रहा है इंटरसेप्ट से. इंटरसेप्ट तो कोई फैक्टर नहीं है, उसको हटाओ. ठीक है, फैक्टर कौन से है? x1 और x2. x1 कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 70 यहाँ पे, 30 यहाँ पे. तो ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? x1 ना. यहाँ पे
90 is contributed by x1, 110 contributed by x2. So which one is contributing more? x2. तो रीजन अगर कोई पूछे इसके लिए प्रेडिक्शन का रीजन होगा टॉप मोस्ट रीजन x1, यहाँ पे टॉप मोस्ट रीजन x2, whatever that x1 x2 is. Make sense? ठीक. हाँ नहीं, ओवरऑल डेटा में इंपॉर्टेंस कम्स फ्रॉम द बीटा, एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ बीटा. अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंस देना है तो बीटा इंटू एक्स हो जाएगा. बीटा गिव्स यू दी ओवरऑल इंपॉर्टेंस. अगर आपका क्लाइंट आपसे पूछे कि मेरे को बताओ पूरा डेटाबेस में सबसे ज्यादा वेरिएबल कौन सा इफेक्ट करता है, तो वट एवर वी डिड राइट नाउ, राइट, यू विल डू दिस, टेक द टॉप वेरिएबल. अगर कोई बताता है कि इस कार का इतना लो सेल क्यों है, तो आप क्या करोगे, बीटा एक्स कैलकुलेट करोगे, जो सबसे हाईएस्ट है. हाईएस्ट मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू जिसका सबसे हाईएस्ट है, वो आपका रीजन बनेगा, है ना. Yes. Any questions? Any question? Sir, Yes. only we have a equation and we got the beta values, and we do have a three models for linear regression. So You which have what model? models? We do have a three models, right? We have prepared Three the. models नहीं है, three models नहीं है, मॉडल एक ही है, तीन उपाय है करने के लिए. हाँ, तीन उपाय, उसमें से कौन सा बेस्ट फिट है ये तीनों थोड़ा एक सा ही बता. रिजल्ट देंगे, हमेशा एक ही रिजल्ट आएगा. हमेशा 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 एक ही रिजल्ट आएगा. आपको जो मन हो वो करो. ठीक. Then what was the easy model to use? Recommendation है. नहीं, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, मतलब आपको जो अच्छा लगे. Okay. Okay. Is anything else? सर लीनियर रिग्रेशन के थ्रू कॉजुअल मॉडल भी करते हैं ना? और कर सकते हो, मतलब फॉर इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू. कॉजलिटी के लिए अलग मॉडल्स हैं. कॉजलिटी में प्रॉब्लम क्या है ना, सपोज आई एम प्रेडिक्टिंग योर एज, ठीक है, सो एज इज माई वाई. तो एज प्रेडिक्ट करने के लिए व्हाट आई यूज वाज योर हाइट, योर वेट एंड योर इनकम. ये तीनों रिलेटेड है ना हाईली एज से, तो ये तीनों को यूज कर सकते हैं. तो ये जो मॉडल बना, इस मॉडल से हम ये बोल सकते हैं कि यस, एज इज रिलेटेड टू हाइट, एज इज रिलेटेड टू वेट एंड एज इज रिलेटेड टू इनकम. बट वी कैनॉट से एज इज डिपेंडेंट ऑन इनकम. द प्रॉब्लम विद दैट इज, अगर आपका इनकम नहीं बढ़ेगा एज भी नहीं बढ़ेगा क्या? वो नहीं होता है ना. सिमिलरली आपका हाइट नहीं बढ़ेगा तो भी एज बढ़ ही जाएगा. तो कॉजल नहीं है, इट इज नथिंग इज कॉजल है. बट सर डेटा में जो मॉडल में है बीटा वैल्यूज टेलिंग ऑल दिस ना, कि व्हाट इज इन इफेक्ट ऑफ इनकम ऑन एज. हाँ, मैंने ये बनाया ना, ये मॉडल बनाऊंगा तो मेरे को बीटा वैल्यू मिलेंगे ना जी. हाँ, तो इससे आप बता सकते हो कि एज इज डिपेंडेंट ऑन इनकम. या बता सकते हो. नहीं मतलब हाउ इनकम इन्फ्लुएंसिंग माय एज ना, वी कैन से लाइक समथिंग. हाँ, तो मतलब so if you say that, then it basically means that if your income is not increasing, your age should also not increase, right? No, not like that. Yeah. तो नहीं बता सकते हो ना. Yeah. So linear regression is not a causal model. It is not a causal model. It basically looks at relationship, but Okay. not the directionality of the relationship. The relationship direction might be something else. ना? इसको कॉजलिटी की तरह से यूज कर सकते हो आप. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई एम स्टडिंग इनकम, राइट, and I make sure that whatever variable I include as X, I know that they are basically the factors for income. जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनकम के लिए, प्लस से बाप का इनकम, राइट, वो भी फैक्टर है. तो ये दो अगर मैं इंक्लूड करूं तो इसका जो बीटा आएगा ना, उससे मैं बोल सकता हूं कि हाँ कॉजलिटी है. अगर मेरा एजुकेशन बढ़ेगा
तो इनकम बढ़ना चाहिए। सिमिलरली बाप का इनकम बढ़ेगा तो भी इनकम बढ़ना चाहिए, है ना? पर not necessarily. Linear regression is not necessarily a causal model, but you can use it as a causal model. Do you understand? The causality has to be verified by you. आपको वेरिएबल्स ऐसे सिलेक्ट करने हैं जो एक्चुअली कॉजल हो। लीनियर रिग्रेशन मैकेनिज्म में ऐसा कोई वो नहीं है कि वो खुद से सिलेक्ट करे कॉजल वेरिएबल्स, वो बस रिलेशनशिप देखेगा। रिलेशनशिप और कॉजलिटी बहुत डिफरेंट है, ये समझ में आता है ना? हाँ, मतलब रिलेशनशिप एंड कॉजलिटी बहुत डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका, आप अगर जेंडर और हाइट का देखोगे ना, रिलेशनशिप बहुत हाई होगा। आई मीन मेल का हाइट जनरली ज्यादा होता है, राइट, एज कंपेयर टू फीमेल। पर हाइट इज नॉट कॉजिंग द जेंडर। अगर आप लंबा हो गए, जेंडर थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो कॉजलिटी नहीं है, रिलेशनशिप है, राइट? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिलेशनशिप एंड कॉजलिटी। Okay. Sir, after data preparation, so we have almost finished the linear regression here. तो We एक are बार almost नहीं, हमने फिनिश कर दिया है। हाँ मतलब फिनिश हो गया है सर। तो एक बार समरी बता देंगे, मतलब इन शॉर्ट तीनों मॉडल के लिए आफ्टर डेटा प्रिपरेशन। हाँ, ओके। सर मेरे को यहाँ पे एक क्वेश्चन था जो आपने अभी डिलीट किया, जो फर्स्ट था ना हमारा मॉडल नेम डॉट प्रेडिक्ट, ये जो हमने इक्वेशन निकाला वो यहाँ पे आप कह रहे हैं? हाँ, मॉडल नेम डॉट प्रेडिक्ट अगर आप पाइथन में रन करते हो, इट विल यूज दैट इक्वेशन एंड प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ y। ओके ओके। सर कोई नया डेटा जब आएगा हमारे पास, so we'll put in same equation to predict y। हाँ, वो नया डेटा मतलब नया x आएगा ना, हाँ नया x आएगा, x को ये डॉट प्रेडिक्ट के अंदर डालना है तो ये y बता देगा। ओके। Okay. Before we go into summary, any question on whatever we have covered so far? Clear, na? Okay. Cool. So now let's do a summarization before we move on to the next topic. बेसिकली लास्ट वन जो मैथ्स आपने कैलकुलेट किया था, इसके लिए हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा ना? क्या कैलकुलेट किया था मैंने? जो आपने फैक्टर कैलकुलेट किया ना लास्ट में कि बीटा बीटा 1 ज्यादा वो कर रहा है, हाँ, उसके लिए आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा ना? ठीक। Okay, so the first thing that you do when you are building any model is basically import the data. After importing the data, you basically clean the data. Cleaning the data may what comes is first is you ensure the proper formatting. Formatting as in you look at things like info, D types to ensure that whatever has been read are in proper formats. Do a head and tail to make sure that variables have been read properly. After that, you work on separating categorical and numeric data. After you have separated on numeric data, you primarily work on outlier treatment. After that, you work on missing value treatment. Then you move on to categorical variable. You work on, if there is missing value, you work on missing value treatment. Simply instead of mean, use mode. Then you create, if there is no missing values, then you create dummies. After you have created dummies, you basically combine numeric and categorical data, right, to have one single data. So this is basically all about cleaning your data. Now, once you have cleaned the data, the next thing that you do is you separate data into two parts, right? Training and testing.
Now, whatever I'm going to write now onwards will only be done on training data, right? Forget about testing data. So, training data pe, what you will then do is you will study correlation between y and every x, right? So after studying this, you will select top variables based on absolute value of correlation with y, right? This only do this if you have large number of variables, right? You have a huge number of variables, then only do this. Make sense? Okay. So after you have separated them out or selected the variables, then we'll test for couple of assumptions. You will check the normality by normality of y by plotting histogram of y, right? अगर normal नहीं है, if not normal, take a log, right? Then once you say again, I'm writing these steps doesn't mean that you have to do everything in this sequence. मैं steps लिख रहा हूँ, right? आप आगे पीछे कर सकते हो. Check the normality. After that, once you have checked the normality, then you check for linearity between y and x. कैसे आप check करोगे? Get scatter plot for every x with y. Using that, you figure out whether it's linear or not linear. The thumb rule is if it is not, or if it is drastically not linear, assume linearity, right? If it is not drastically not linear, assume linearity. Now, once you have checked for the linearity, then what you do is build the model. Now, build the model can be done in 3 ways. Stats model.api, formula API, scalar. Okay. Now, once you have built the model, the next thing that you are going to do is you check for autocorrelation. Now, how do you check for autocorrelation? Darwin-Watson statistic should be approximately equal to 2. Now, once you have checked for this, the next thing that you do is you check for bias variance trade-off, right? Now is when your testing data comes into play, right? So once you have built the model, you calculate error. Error basically means MSE for training data. You calculate error for testing data, right? And if the errors are drastically different, it means there is a problem. Next, once you have done the bias variance trade-off, the next thing that you are going to do is
you are going to calculate the residuals, right? Why do we need to calculate the residuals? Because the rest of the hypotheses are actually on residuals. So what you do is you calculate the residuals, then you plot. So either plot a histogram of residuals or plot a QQ graph to verify normality. But again, having said that, if you have checked the normality of Y already, you don't need to do this. Right? Either do it here or here. Anyone. रेजिडुअल का लॉग लेने से फायदा नहीं है ना, रेजिडुअल तो रेजिडुअल ही होगा, उसका लॉग लेके वो अगर नॉर्मल हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, रेजिडुअल शुड बी नॉर्मल. Next, then you basically plot actual Y versus residuals. If there is no funnel shape, it implies no heteroscedasticity. Okay. Sir, what is the exact meaning of heteroscedasticity? Hetero means different, scedastic means variance. Okay. मतलब different variance है. Okay. So these are basically the 12 steps to build a linear regression. These are all the steps. So p value treatment भी करेंगे ना? हाँ, तो Greater than building the model में वो included है. So build the model में यहाँ पे obviously मतलब capital letter में ensure that all variables have p value less than equal to 5%. So can you please upload this notepad with the link? Okay. Sir, at the point number 9, the difference between the errors. So, is there any benchmark that error should be like between that or less than कोई that? benchmark नहीं है. There is no benchmark for the error. Again, the usual thing is the fluctuation between training and testing error should not be more than 10%. Okay. It should be less than 10%. Fluctuation should be less than 10%. It should be closer to 1. Closer to each other. हाँ, closer to each other. तो अगर training error है suppose 10, testing error should be between 9 and 11. है ना? 9 to 11 के बीच में होना चाहिए. उससे बाहर गया मतलब गड़बड़ है. And sir, one more question in the categorical variable. Suppose I have 10 categories, right? In the same variable, 10 categories, and some categories only have a 1%, 2% in the data. So So you combine those categories. You can combine them, no? Yeah. So you have to manually do that. So that cannot be automated. So you have to manually combine them. Okay. So we can combine them, make the list categories. This is good for the modeling, right, sir? Yeah, obviously. If you have 1 to observations in a category, it doesn't make sense to have them as singular ones. Okay. Yeah. Thank you. Sir, what here the means for the calculate error MSC equals to training data 10 and the 9 and 11? Error, basically calculate error. Error, by error I mean MSC. Mean squared error, yes. Calculate that on the training data, calculate that on the testing data. Okay, it is the value for MSC. Sorry sir, आप क्या बोल रहे थे? Mode. Okay. Yes. Any question on this? Sir, जैसे कि उसमें we have stepwise. I believe you know our programming also, sir. Just one question from there. We have a stepwise method, forward method. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ड्यूल. नहीं, आपको बनाना पड़ेगा. अच्छा, okay. बनाना बहुत इजी है. You understand, right? आपको p वैल्यू तो मिल जाएंगे ना, उसके बाद आप ड्रॉप करते रहो. अच्छा, मतलब मल्टीपल टाइम्स रन करना पड़ेगा. स्टेप वाइज एक ही बार में दे देता है. लूप लिखना पड़ेगा.
अच्छा, okay. Yes. Quick question. Okay. So if there is no question, so let's take a break. After this break, what we are going okay. So the next topic that we are going to talk about now is logistic regression. Logistic regression is basically part of supervised learning, and within supervised learning, it is basically part of classification type of problems, right? So supervised learning, within that classification, within that, logistic is one technique. Make sense? Okay, now why do you think, so you all of you understand the linear regression, right? What is the basic format of it at least? Now, why do you think a linear regression cannot be used for a classification problem? If your data is not normally distributed. Okay, now before we answer that, do all of you understand what do I mean by a classification problem? Classification problem specifically for a logistic regression, it only tackles a binary classification. Binary classification basically means that your y takes only two values, right? Usually denoted by zeros and ones, right? Y will take either 0 or 1 as its value. What we are trying to do is, based on the values of x, we are trying to predict the value of y. Now, in this case, there are a number of reasons why linear regression is not apt. One is what this just now somebody said, which is y is not normal, right? A binary variable cannot be normal, right? So that's one. Second thing is, if you look at the linear regression, a linear regression has this following format, right? So y is equal to beta 0 plus beta 1 beta 1 into x1 plus dot dot dot, right? So this is the format of a linear regression. The problem with this format is, especially in classification, if you keep on increasing the value of x, there is no bound on y. Y can go to infinity, right? Similarly, if you keep on reducing x, y can go to minus infinity. So there is no bound, right? That's another problem with linear regression. So another problem is y is not bounded between 0 and 1, right? Now, the third problem is, if you imagine a classification problem, if you Sir? plot x versus y, if this is x and this is y can take only two values, right? Zeros and ones, right? So what you will see is, for some values, y will be lying somewhere around here. Crosses basically means one observation, okay? And then for some, the y value will be lying here, assuming that this is 1 and this is 0. Make sense? That's how the data will look like, right? Now, a linear regression will try to draw a line, which you can clearly see is not the right thing to do, right? If you draw a line,
you will not predict things very accurately. Make sense? So that's the third reason. Third reason is in classification, X and Y are not linearly related. They're not really linearly related. So you cannot build a linear regression model for classification. Make sense? Yeah. Okay. Now, so all of you are now clear on why we can't use this normal linear regression equation to predict for a classification problem. Now let's come up to the solution. So what do we actually use? No. I think the second point should be y is bounded between 0 and 1, not Sorry. y is bounded between 0 and 1 for classification, right? I'm writing the problems with linear regression, right? Problem with linear regression is the y in linear regression is not bounded between 0 and 1. Okay. Oh, okay. Now, so what is the solution, right? Now, to understand the solution, we'll have to understand few terminologies and few business context here, right? The terminology that we'll have to understand is in logistic regression, we will be looking at two y's here, two kinds of y, right? One is y for the business, and second is y for the logistic regression, right? So you have two y's here. One is y for the business, second is y for the logistic regression, right? Now, what is y for the business? Y for the business is actually things like basically it's the variable that you are trying to predict, right? So it will be things like default or not default. Default, you understand, right? You are default on a loan. Similarly, bought a product or not, right? So y for a business will always be a yes no kind of scenario or a 0-1 kind of scenario. Do you understand? So for example, I own a business, right? What I want to do is I want you to build a model which will tell me whether the next person that I lend some money to, right? Whether he or she will return that money to me or not, right? In that case, what is the y? Whether he or she will return the money or not. That is the y, right? Yes, no, yes, return, no, does not return, right? 0-1, right? So y for the business will always be zeros and ones. Make sense? All of you agree with that? Okay. Now, y for the logistic is not 0 and 1. Y in the logistic method is actually probability that y is equal to 1. So the logistic will not tell you the predicted value of y. Do you understand the difference? In linear regression, the equation itself gave you what is the predicted value of y. Here, the equation will not, or the algorithm will not give you the predicted value of y. It will just throw out a probability that y is equal to 1. There is a difference, right? Now, you have to go from this probability to the business definition, because the business wants the answer. You cannot give them the probability. They want yes, no, right? So you will have to now go from the y of the logistic regression to the y of the business using some other technique that we will discuss, right? But when we talk about logistic regression and I say y here means the probability that y is equal to 1. Y means business y.
right? For the business, the y is actually ones and zeros. For logistic, y is basically probability that the business y is equal to 1. Make sense? Yes. Oh, problems with linear regression when used in classification. क्लासिफिकेशन में आप यूज करोगे ना, क्लासिफिकेशन में y नॉर्मल नहीं होता है, तो ये लीनियर रिग्रेशन का प्रॉब्लम है. Okay. Now, do you understand the difference of two y's here? Right? You understand, right? Okay. So the first thing that we are going to do to solve this problem, there are two problems here. One is y for the logistic regression, then y for the business. The final outcome will be y for the business, but we'll have to solve first to get the second. So the first thing that we are going to solve is logistic. So first thing we'll solve for the y of logistic. Once you know the probability, then you can go from probability to the predicted. Okay. Now, how do you solve for the y of logistic? In order to understand how to solve for this y, we need to again understand few terminologies. The first thing that we'll understand is what is odds. Anybody has ever betted on anything? Odds पता है किसी को? Odds क्या होता है? Chances to probability है. What is odds? Odds is basically probability of an event happening divided by probability of that event not happening. वो odds होता है, right? So odds is probability of an event divided by probability of that event not happening. Right? This is known as odds. ठीक है? Clear? Okay. Abhi we will now understand. So this is just a definition that you need to know to understand the logistic equation. Now, let me define what is P. So whenever I write P from now on, P is basically probability that business y is equal to 1. So P basically means probability that business y is equal to 1. Now, what is the logistic equation? Logistic equation or the logistic regression equation is basically log of P by 1 minus P is equal to beta 0 plus beta 1 into x1 plus dot dot dot, right? So this is the logistic regression format. Now, if you look at the logistic regression format, the right hand side of this format is exactly same as the linear regression, right? The right hand side looks exactly the same. What is different is in the left hand side. In the left hand side, what we have now, what is this term? Odds of y is equal to 1, right? So the left hand side is log of odds, right? So logistic regression basically tries to predict the log of odds using a linear combination of x. Now, why do we have such a peculiar equation here? Why can't we directly predict the probability? There are a couple of advantages of having this format. One advantage is the shape of this curve, right? So if you have x and you plot log of x by 1 minus x, right? The shape will be something like this. It is a S shape. So say shape of this function is basically a S shape, right?
So the advantage of this format is whatever the value of the right hand side, the P will always be bounded by zeros and ones, right? So for example, sorry, I actually have, so if you look at the shape of this curve, right? So this curve is limited by 0 and 1. No matter how high the value of logit, right, P will always be bounded by 0 and 1. Right? So if the shape of the function is, so if you have, so logit, this function is basically log of odds, right? Another name is logit. So logit, if you plot logit in the x-axis and P in the y-axis, the curve looks like this, a S shape. ठीक है? तो ये S shape का property क्या है? S का property क्या है कि वो ना एक height तक जाके फिर horizontal हो जाता है. ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? Logit आप जितना भी बढ़ाओ, logit मतलब क्या है? It is equal to the right hand side, right? Right hand side basically जितना भी high हो, P का भी 1 से ऊपर नहीं जाएगा. एक पॉइंट के बाद ये फ्लैट हो जाएगा 1 पे. सिमिलरली लॉजिट जितना भी कम हो, P का भी 0 से नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पे फ्लैट हो गया. तो दिस सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम, राइट? ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. सेकंड, अगर आप लॉजिट कर्व को देखोगे तो ये एस शेप है, राइट? It is a shape. So if I have x in the x-axis and I have p in the y-axis, now logit के जगह पे logit is what? A function of x, right? If you look at this equation, the left-hand side is a function of x, right? तो मैं ये बता सकता हूँ कि x, अगर x को मैं यहाँ पे x-axis पे plot करूँ और p को y-axis पे plot करूँ, the curve will also be a s, right? Now, if you look at this s curve, and if you remember what kind of plot will I get if I plot x versus y, I get a plot like this, right? We saw it, right? We got a plot like this. The S shape basically justifies this plot. So that solves this problem. Did we see? If you looked at what we did just 10 minutes back, right? The problem is if we have a linear regression, the line will be like this, right? Which is not the right thing to do. Instead of that, if we have a S shape, that will perfectly justify most of the points, right? So that's why the S shape. Okay. So these are the reasons why we prefer using a logistic regression in case of a classification problem, specifically binary classification. Yes, any question? Natural log. So whenever I write anything on log, it is always natural log. Okay. This is clear, right? Okay. Okay. So in this particular case, to build this equation, what do we need? So this is the format of the logistic regression, right? So linear regression में भी आपको format मैंने बता दिया था. उसके बाद problem क्या था? What was the next step? Format तो पता लग गया अभी. अभी Found the beta. करना क्या है? Beta निकालना है, right? Okay. Right. So यहाँ पे we cannot use a OLS method. Reason being, OLS method जो linear regression में use होता है, वो क्या करते हैं? MSE को reduce करता है, right? MSE को reduce इसलिए कर पाता है because MSE in a linear regression is differentiable, क्योंकि वो continuous value पे होता है, right? In this case, it will not be differentiable.
क्योंकि प्रेडिक्टेड y जो आपका होगा वो 0 1 होगा, सॉरी प्रेडिक्टेड y आपका प्रोबेबिलिटी होगा 1, एक्चुअल y 0 1 में होगा. So the residuals that you will get or the errors that we'll get will not be differentiable. So we cannot use a OLS method to build or get this beta, right? इस पे OLS नहीं काम करेगा. तो इसमें हम जो मेथड यूज करेंगे to estimate the betas is known as ML method, right? ML stands for maximum likelihood. ठीक है? ML stands for maximum likelihood. Now नेक्स्ट 5 मिनट के लिए ना थोड़ा कंसंट्रेशन से आप सुनना, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग थोड़ा फेज आउट हो जाते हैं. मैक्सिमम लाइक्लीहुड, तो इसमें एक वर्ड है मैक्सिमम, दूसरा वर्ड है लाइक्लीहुड. मैक्सिमम सबको पता है, लाइक्लीहुड क्या है मैं बताता हूँ. तो नॉर्मल कॉलोकियल लैंग्वेज में लाइक्लीहुड, अगर कोई आपको पूछे लाइक्लीहुड का मीनिंग क्या है, तो आप क्या बताओगे? लाइक्लीहुड तो नॉर्मल इंग्लिश वर्ड है ना. हाँ, लाइक्लीहुड, लाइकली इज सिमिलर, लाइक्लीहुड मतलब क्या है? Probability of likely to happen, right? So basically probability, likelihood of an event मतलब probability of an event. ठीक है. तो लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन के मुताबिक P is what? Probability that y is equal to 1. y मतलब बिजनेस y समझ लो. अभी y जब भी मैं लिखूंगा बिजनेस y, ठीक है. अच्छा चलो लिख देते हैं, by लिखते हैं इसको, ठीक है. Probability that business y is equal to 1, ठीक है. तो 1 माइनस p क्या होगा? Probability that y is equal to 0. y तो नॉट इक्वल टू 1 मतलब दो ही वैल्यू लेता है तो 0 होगा, ठीक है. ओके. नाउ तो अगर आपके पास एक ऑब्जर्वेशन है जिसके लिए y का वैल्यू 1 है, उसका लाइक्लीहुड क्या होगा? p. अगर आपके पास एक ऑब्जर्वेशन है जिसका y का वैल्यू 0 है, उसका लाइक्लीहुड क्या होगा? 1 माइनस पी. तो मैं क्या करूंगा, मैं जेनरिक कोड एक एक्सप्रेशन लिखूंगा जो मेरे को लाइक्लीहुड ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन देगा, ठीक है. तो लाइक्लीहुड ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन है ना, तो दैट विल बी p टू द पावर y into 1 minus p to the power 1 minus y, है ना. इसमें y इक्वल टू 1 डालो क्या आता है? p आएगा. y इक्वल टू 0 डालोगे तो 1 माइनस p आएगा. तो ये जेनेरिक एक्सप्रेशन हो गया ना, जो हर ऑब्जर्वेशन के लिए लाइक्लीहुड देगा, है ना. तो दिस बिकम्स लाइक्लीहुड ऑफ वन ऑब्जर्वेशन. लाइक्लीहुड ऑफ वन ऑब्जर्वेशन मतलब एक ऑब्जर्वेशन जो आपके पास है. ऑब्जर्वेशन तो ऑलरेडी है ना आपके पास, डेवलपमेंट डेटा तो आपके पास है. वो डेवलपमेंट डेटा में एक ऑब्जर्वेशन का एग्जिस्ट करने का प्रोबेबिलिटी ये है. क्लियर? ओके. डेवलपमेंट डेटा में क्या आपके पास एक ऑब्जर्वेशन होता है? बहुत सारे होते हैं ना. So now अभी we will do what we'll do is we will get likelihood of the data set. आपके पास जो data set होगा ना, should it be multiply sign or product sign between py? sorry, Will it be plus sign or multiply sign? this is multiplication. Okay. Okay, now हम क्या करेंगे अभी? We were trying to find likelihood of data set, है ना. तो सपोज आपके पास एक रुपए का कॉइन है, एक 10 रुपए का कॉइन है. दोनों को टॉस करोगे. लाइक्लीहुड ऑफ हेड फॉर 1 रुपए का कॉइन इज 0.5. लाइक्लीहुड ऑफ हेड फॉर 10 रुपए का कॉइन इज 0.2. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी में दोनों को टॉस करो और दोनों में हेड आए?
₹1 के कॉइन में हेड आने का प्रोबेबिलिटी 0.5 है, ₹10 के कॉइन में हेड आने का प्रोबेबिलिटी 0.2 है। दोनों को टॉस करूंगा तो कितना आएगा? 0.01, 0.5 इंटू 0.2 0.01, है ना। तो मेरा पॉइंट ये है कि दो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, उनका प्रोबेबिलिटी अगर आपको एग्जिस्ट करने का पता है, दोनों का एक साथ एग्जिस्ट करने का प्रोबेबिलिटी विल बी देयर प्रोडक्ट। तो आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस आते हैं लाइन बाय लाइन, एक लाइन दूसरे लाइन से इंडिपेंडेंट है ना, एक लाइन दूसरे लाइन से कोई रिलेशनशिप होना नहीं चाहिए। तो अगर एक लाइन का प्रोबेबिलिटी ये है, ये एक लाइन का प्रोबेबिलिटी है ना, तो पूरे डेटा का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट होगा ना। ओके, सो नाउ व्हाट इट विल हैव इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे मतलब आपको आप देख लो कैसे लिखना है। प्रोडक्ट को मैथमेटिकली ना पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पाई ऐसे लिखते हैं। मतलब ये थोड़ा मशरूम टाइप का बन गया है, पर मतलब ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। सो इट विल बी प्रोडक्ट आई इज इक्वल टू 1 to n, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, इनटू pi, pi मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द ith ऑब्जर्वेशन टू हैव y इक्वल टू 1, pi टू द पावर yi into 1 minus pi to the power 1 minus yi। ये हो गया आपका पूरा डेटा का प्रोबेबिलिटी, है ना। अभी मैं इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, पर मैं नोटपैड में वैसे लिख नहीं पाऊंगा, मैं ऐसे प्रोडक्ट लिखूंगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ pi to the power yi into 1 minus pi to the power 1 minus yi, है ना। तो all of you agree with this? So what is this mushroom? So what is this mushroom look like? क्या क्या क्या? हाँ, ये मशरूम की तरह मैंने बना दिया, वैसे है नहीं, ये कैपिटल पाई है। ओके, तो दिस इज द लाइक्लीहुड ऑफ द डेटा सेट, है ना। तो डेटा सेट तो ऑलरेडी आपके पास है, जो इवेंट है उसका लाइक्लीहुड क्या होना चाहिए? सपोज इंडिया का आईपीएल में सॉरी इंडिया का तो मैच नहीं होता है, सपोज आईपीएल में मैच होता है, राइट, दिल्ली वर्सेस बैंगलोर। आपको पता है दिल्ली जीत गया है मैच, तो आपको अगर कोई पूछे आज दिल्ली का मैच जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1, ठीक है। तो डेटा तो आपके पास है, आप तो देख सकते हो, मतलब डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका एग्जिस्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए? 1, राइट। ये क्लियर है ना? ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो पीआई है, पीआई एग्जैक्टली है क्या? पीआई इज कमिंग फ्रॉम लॉजिस्टिक, राइट। तो लॉजिस्टिक का फॉर्मेट क्या है? log of p divided by 1 minus p is equal to beta 0 plus beta 1 into x1 plus dot dot dot, है ना। ये इक्वेशन को थोड़ा मैनिपुलेशन करके आई कैन राइट p is equal to e to the power this whole thing divided by 1 plus e to the power this whole thing, है ना। मैं लिख सकता हूँ e to the power ले लोगे तो आप p by 1 minus p बन जाएगा, इधर क्या होगा e to the power ये बन जाएगा, उसके बाद थोड़ा मैथमेटिकल इधर उधर करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसके डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ, आपको करना है तो घर पे जाके कर लो, ठीक है, ये आ जाएगा।
ठीक है. सो P इज बेसिकली दिस एक्सप्रेशन. ये याद रखने की जरूरत नहीं है. माई ओनली पॉइंट इज, डू यू एग्री दैट P इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ बीटास? X तो आपको पता है, ठीक है, X तो आपके डेटा में है ना. व्हाट इज मिसिंग इज बीटा. तो ये जो P है ये बीटा से आ रहा है ना. तो दिस होल लाइक्लीहुड इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ बीटा. और हमको पता है कि डेटा क्योंकि एग्जिस्ट करता है, ये लाइक्लीहुड 1 होना चाहिए, है ना. तो हम बीटा वैल्यूज वैसे चॉइस करेंगे और चूज करेंगे which make this likelihood as close to 1 as possible. है ना. इसमें अननोन क्या है? अननोन इसमें y आपको पता है, x आपको पता है, अननोन इज बीटा. बीटा आप ऐसे चॉइस करोगे ताकि ये जो प्रोडक्ट है लाइक्लीहुड ये 1 के पास जाए. So we are trying to maximize the likelihood. That's why the name maximum likelihood. आप अपने डेटा का लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज कर रहे हो. मेक सेंस? कोई क्वेश्चन है? वो कहाँ पे ये वाई है इज बिजनेस वाई. आए तो ऑब्जर्वेशन. हाँ, एक्सपी मतलब ई टू द पावर. लॉग का उल्टा क्या होता है? ई टू द पावर होता है ना. है ना. एनी क्वेश्चन ऑन दिस? ये ना समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू में पूछते हैं ये. तो ये अगर समझ में नहीं आया है तो आप बताओ, आई विल एक्सप्लेन अगेन. नो बीटा. एक्स तो आपके पास है, बीटा का वैल्यू आपको पता नहीं है. तो बीटा का वो वैल्यू, जैसे लीनियर रिग्रेशन में हम क्या कर रहे थे, बीटा का वो वैल्यू हम ले रहे थे जिसके जो लेने पे एमएसी सबसे कम हो. यहाँ पे बीटा का वो वैल्यू लेंगे जिसको लेने से लाइक्लीहुड सबसे ज्यादा हो. एग्जैक्टली. सो दिस प्रोसेस इज एक्चुअली आइटरेटिव प्रोसेस. इसमें क्या होता है, बीटा का डिफरेंट वैल्यूज ट्राई करते जाते हो until and unless you zero in on a pair of values or a set of values for which the likelihood is as high as possible, right? इसके लिए एक मेथड जो नॉर्मली यूज होता है उसका नाम है न्यूटन रैप्सन. आप में से कोई इंजीनियर है? न्यूटन रैप्सन पढ़ा होगा. हाँ, तो न्यूटन रैप्सन यूज होता है इसमें. न्यूटन रैप्सन यूज करके आप लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हो. ये फंक्शन याद रखना जरूरत नहीं है, मतलब न्यूटन रैप्सन भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसे बताया. सर ये लास्ट एक्सप्रेशन बताएंगे एक बार, p इक्वल्स टू e एक्सपी बीटा. हाँ, तो लॉजिस्टिक का ये फंक्शन, ये फॉर्मेट है ना. राइट. ओके. नाउ अगर मैं दोनों साइड पे e टू द पावर ले लूं तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, p बाय 1 माइनस p हो जाएगा ना. राइट. और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ये e टू द पावर ये हो जाएगा, है ना. ओके. तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं 1 ऐड करूंगा. ठीक है, दोनों साइड में एक 1 ऐड करूंगा. तो क्या हो जाएगा, p प्लस 1 माइनस p डिवाइडेड बाय 1 माइनस p हो जाएगा. यहाँ पे ये होता है ना. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस व्हाटएवर ये जो है ये हो जाएगा. तो न्यूमरेटर में क्या बन गया, 1 बाय 1 माइनस p. और यहाँ पे 1 प्लस ये. अभी यहाँ से आपको p सॉल्व करना है. ठीक, अंडरस्टूड. तो ये आएगा. क्लियर? ओके.
So maximum likelihood is clear, right? तो ये जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड है ना, ये एक्सेल में पॉसिबल है नहीं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये एक्सेल में नहीं पॉसिबल है, ये पाइथन में पॉसिबल है या कोई स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर में पॉसिबल है। सो विल नॉट डू, आई मीन लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैन नॉट बी बिल्ड इन एक्सेल। So you will have to use either a Python or something like R or SAS. So maximum likelihood के बाद आपने maximum likelihood कर लिया है, तो what is the output? Maximum likelihood आपको क्या देता है? बीटा देता है, बीटा, राइट? मैक्सिमम लाइक्लीहुड आपको बीटा देता है। तो अगर आपके पास बीटा मिल गया तो you can then predict probability for each and every observation given x। ये इक्वेशन यूज करके यहाँ पे अगर बीटा पता है, मैं आपको x दे दूं, p एस्टिमेट हो सकता है ना? So we know how to calculate or how to get the output of a logistic regression, at least theoretically, है ना? तो हमारा जो दो प्रॉब्लम्स थे यहाँ पे, अगर if I go back, we had two false problem, right? One is logistic of y, second is one is y of logistic, second is y of business. तो y of logistic कैसे solve करना है theoretically हमको पता है, practically हम करेंगे later on, but theoretically हमको पता है। क्लियर? कोई क्वेश्चन है? ओके, नाउ अभी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, आप बिजनेस को तो प्रोबेबिलिटी दोगे नहीं, बिजनेस आपको पूछेगा कि ये बंदा डिफॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा। दैट आंसर टू दैट क्वेश्चन कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज 0.3। ये आंसर नहीं होगा, बिकॉज दैट, आई मीन द बिजनेस विल नॉट नो व्हाट टू डू विद दैट प्रोबेबिलिटी, है ना? यू विल हैव टू गिव अ यस नो आंसर। तो प्रोबेबिलिटी से हम अभी देखेंगे यस नो कैसे जाते हैं, ठीक है? क्लियर? ओके, now from now on what I will assume is you have basically आपके पास pi है for all I, मतलब सब ऑब्जर्वेशन के लिए आपके पास प्रोबेबिलिटी पड़ा हुआ है, राइट? नाउ अगर आपको कोई पूछे कि let's say I tell you that a probability for India to win against Bangladesh is 0.7। अभी बताओ नेक्स्ट मैच में कौन जीतेगा? आपका आंसर क्या होगा? क्यों हाई? मतलब प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी तो 0.7 है, हाँ, तो मोर एज कंपेयर टू, मोर एज आपका बेंचमार्क क्या है? बेसिकली मतलब नॉट, आपका बेंचमार्क 0.5 है ना, 0.5 से ऊपर गया तो आप 1 बोलोगे, है ना? सो ways to convert probability to 1-0 output, right? सबसे इजी जो आंसर है ना, if pi greater than 0.5 then क्या बोलते हैं, y predicted y is equal to 1, है ना? तो ये इजीएस्ट है, ठीक है? अभी लेट्स से आपको मैं एक सिनेरियो देता हूं। अभी देखिए, then there is a separate thing is if you want to take any other out cutoff, right? So user input cutoff, आपको मन हुआ 0.3 लेंगे तो 0.3 भी ले सकते हो, ठीक है? थर्ड सिनेरियो है, सपोज आपको मैं बोलूं कि यूजुअली जितने लोग लॉटरी खरीदते हैं उसमें से लॉटरी मिलता है 0. आई मीन उसमें से जीतते हैं 0.001, मतलब 1 out of 1,000 people win a lottery, right? फिर मैं आपको बोलूं आई नो अ पर्सन जिसके लिए मेरे को पता है प्रोबेबिलिटी फॉर हिम टू विन द लॉटरी इज 0.4 फॉर सम रीजन, राइट?
आपका टोटल डेटा में जितने लोग लॉटरी खरीदते हैं उनका एनी रैंडम पर्सन टू विन दैट लॉटरी द प्रोबेबिलिटी इज 1 out of 1000, right? But for a given person, I tell you that probability for him to win a lottery is 4 out of 10, right? Now if I ask you, will you classify that person as winning the lottery or not winning the lottery? पर ये मैं आपको probability दूं, and if I tell you what is the usual probability, what will be your decision of why? Still zero बोलोगे आप? सपोज आप यहां से बाहर जाते हो, ठीक है, आपके ऊपर बिजली गिरने का प्रोबेबिलिटी कितना है? वेरी स्मॉल, है ना? सपोज आप हाथ में एक लंबा सा आयरन का रॉड लेके खुले मैदान में वॉक कर रहे हो, तो आपका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना? तो वो आपको दिखा के अगर कोई पूछे इसके ऊपर बिजली गिरने का प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि नहीं, आप क्या बोलोगे? है ना? क्यों बोलोगे? क्योंकि उसने काम ऐसा किया है ना कि उसका प्रोबेबिलिटी बढ़ गया है ना? प्रोबेबिलिटी फिर भी 0.5 से कम है। अगर 10 लोगों को आप हाथ में रॉड लेके छोड़ोगे, 5 के ऊपर बिजली नहीं गिरेगा, है ना? प्रोबेबिलिटी फिर भी 0.5 से कम है। बट व्हाई डू वी से दैट in that particular case we will still predict y equal to 1 even though the probability is less than 0.5? एक्सटर्नल कंडीशन नहीं, ये 0.5 का जो assumption है ना, इसमें आप कंसीडर करते हो दोनों इवेंट हैपन करने का प्रोबेबिलिटी इक्वल है। 0.5 वहीं से आता है ना। अगर दोनों इक्वली लाइकली है तो अगर एक का प्रोबेबिलिटी 0.5 को क्रॉस कर गया मतलब वो ज्यादा लाइकली हो गया। अगर दोनों इक्वली लाइकली नहीं है तो कट ऑफ 0.5 नहीं होना चाहिए। इंडिया और बांग्लादेश जब खेलता है, आपको क्या लगता है बांग्लादेश को जीतने का प्रोबेबिलिटी 0.5 रहता है? नहीं रहता है ना, बहुत कम रहता है वो। तो this cutoff should not be 0.5 in a case where the events are not equally likely. So in a case where the events are not equally likely, so अभी एक बिजनेस केस पे आते हैं। जितने भी लोगों को आप लोन देते हो, राइट, आपको क्या लगता है उसमें से 50% डिफॉल्ट कर जाता है तो बैंक बंद हो जाएगा ना? नहीं डिफॉल्ट करता होगा 50%। तो आप जब प्रोबेबिलिटी टू डिफॉल्ट निकालते हो उसमें से जब y प्रेडिक्ट करते हो तो आपका कट ऑफ भी 0.5 नहीं होना चाहिए। आपका कट ऑफ होना चाहिए एवरेज वैल्यू ऑफ y इन डेवलपमेंट डेटा। एवरेज वैल्यू ऑफ y इन डेवलपमेंट डेटा क्या है? y आपका 1 और 0 लेता है ना, तो y का एवरेज वैल्यू लोगे तो वो क्या बताएगा? परसेंटेज ऑफ केसेस वेयर y इज इक्वल टू 1, है ना? y अगर 0 और 1 लेता है, y का एवरेज लोगे तो वो क्या बताएगा? परसेंटेज ऑफ y इक्वल टू 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1, है ना? तो बेसिकली यू विल से इफ pi is greater than average value of y in development data, which basically means percentage of y is equal to 1 in development data, तो आप बताओगे कि y is equal to 1। क्लियर है? ये समझ में आया? नहीं? अच्छा, सपोज आपका एक्चुअल y, ये एक्चुअल y है, ठीक है? एक्चुअल y मतलब बिजनेस y है। ये 1 और 0 लेता है ना? 1 1 1 0 0 0, ठीक है? तो यहाँ पे हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर? 15 ऑब्जर्वेशंस आर देयर, ठीक है? उसमें से 3 ही 1 है। तो प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे अगर आपको कोई पूछे, आपके पास और कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको अगर कोई पूछे कि एक रैंडम पर्सन जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, उसका प्रोबेबिलिटी दैट y इक्वल टू 1 कितना होगा? 0.2। Okay. Now my logic is
इफ ये है बेसलाइन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फिर आपने इस पे एक लॉजिस्टिक मॉडल बनाया, ठीक है, और वो मॉडल आपको क्या देगा, पी, ठीक है। अभी पी सपोज 0.5 0.507 whatever, right? अभी p का एक वैल्यू आया. What I am saying is, if this p is more than the baseline probability, then I will predict that person as 1. क्योंकि वो नॉर्मल जो पर्सन के 1 होने का प्रोबेबिलिटी है उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं. यहाँ पे एक टॉम डिक एंड हैरी कोई भी रैंडम उठाओगे, उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 क्या है, 0.2. पर अगर आप ये बंदे को उठा रहे हो, उसका आपका पता है प्रोबेबिलिटी 0.7 है, तो नॉर्मल पर्सन से ज्यादा है ना प्रोबेबिलिटी उसका y होने का, y इक्वल टू 1 होने का. तो इसको मैं 1 क्लासिफाई करूंगा. सो बेसिकली करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो 0.2 क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ y है ना. एवरेज वैल्यू अगर मैं यहाँ पे y का एवरेज वैल्यू लूं ना, तो ये एग्जैक्टली 0.2 आएगा. है ना. तो basically if pi is greater than the average value of y, which is same as percentage of y equal to 1 in the development data, then predict y is equal to 1. Make sense? ठीक है. Now, okay. So you understand the first one. Second one is कोई भी user input cutoff ले लो, ठीक है, कुछ भी. You understand the third one, right? ये तीनों में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता है, मतलब which do you think will give you a better result? Third one. But third one में भी problem है. The first and the third are both are the interrelate ना? नहीं इंटर. फर्स्ट में तो आप 0.5 फिक्स कर रहे हो ना. Yes. यहाँ पे आप एक्चुअली डेटा सेट से एवरेज वैल्यू ऑफ y निकाल रहे हो. अगर वो 0.5 आ गया तो दैट्स फाइन. Okay. Then first and third becomes the same. Okay. Okay. थर्ड में भी प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि आप जब कट ऑफ कैलकुलेट कर रहे हो, यू आर नॉट चेकिंग कि ये कट ऑफ यूज करने के बाद आपका एक्चुअल एक्यूरेसी कितना है. आपने ब्लाइंडली कट ऑफ ले लिया, ठीक है. उसके बाद वो कट ऑफ यूज करके एक्चुअल एक्यूरेसी कितना आया ये कहीं पे आपने चेक नहीं किया. हो सकता है एक्यूरेसी ज्यादा हो सकता है क्या. एक्यूरेसी पता है ना, मतलब जो 1 है उसको आपने 1 बोला है, जो 0 है वो उसको आपने 0 बोला है. ये एक्यूरेसी ये तीनों मेथड में कहीं पे भी चेक नहीं हो रही है ना. तो ये दैट इज द प्रॉब्लम. So the best method is actually based on a calculation known as confusion matrix. Right? जो एक्चुअल कट ऑफ आप डिटरमिन करोगे, तो प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमको कट ऑफ चाहिए, एक ऐसा कट ऑफ चाहिए जिसमें अपना एक्यूरेसी सबसे हाईएस्ट हो, है ना. वही तो प्रॉब्लम है. प्रोबेबिलिटी आपको मिल गया है, आपको अभी प्रोबेबिलिटी से y इक्वल टू 1 0 करने में क्या चाहिए, कट ऑफ चाहिए ना. तो कट ऑफ ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका एक्यूरेसी मैक्सिमाइज्ड हो. आप समझ रहे हो बात. लॉजिस्टिक क्या देगा आपको, प्रोबेबिलिटी देगा. बिजनेस को क्या चाहिए, 1 0 चाहिए. प्रोबेबिलिटी से 1 0 जाने का एक ही उपाय है, एक कट ऑफ लो, उसके ऊपर गया तो 1 बोलो, नीचे गया तो 0 बोलो. तो कट ऑफ ऐसा चूज करना चाहिए ताकि एक्यूरेसी ज्यादा हो. आपका मॉडल बनाने का एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्यूरेट प्रेडिक्ट करना है ना. तो वो एंड ऑब्जेक्टिव है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक हेल्प ऑफ मेथड नोन एज कंफ्यूजन मैट्रिक्स. अभी कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है, मतलब ये नाम कंफ्यूजन है, उतना कंफ्यूजिंग है नहीं, ठीक है, क्लियर है. कंफ्यूजन मैट्रिक्स में ये एक चीज करता है. टू बिल्ड अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स यू फर्स्ट नीड अ कट ऑफ. ये थोड़ा मुर्गी पहले के अंडा पहले टाइप का है, पर आप एक कट ऑफ ले लो,
ठीक है, कुछ भी ले लो. सपोज आई टेक कट ऑफ ऑफ 0.5 बिकॉज इट्स द मोस्टली यूज्ड कट ऑफ. ठीक है, तो अगर मैं कट ऑफ ले लिया तो मेरा पास यहाँ पे एक प्रेडिक्टेड y आ जाएगा, है ना. तो प्रेडिक्टेड y में मैं क्या बोलूंगा, इफ दिस इज ग्रेटर देन 0.5 देन 1 is 0. ठीक है, तो मेरे पास फिर प्रेडिक्टेड आ गया, राइट. नाउ फॉर ईच ऑब्जर्वेशन आई हैव एक्चुअल y एंड हैव अ प्रेडिक्टेड y, है ना. तो मैं एक मैट्रिक्स क्रिएट करूंगा, बेसिकली एक 2x2 मैट्रिक्स क्रिएट करूंगा. 2x2 मैट्रिक्स में the row labels will be the actual values of y, right. actual values क्या क्या हो सकती हैं, 0, 1 और 0 हो सकती हैं. तो ये हो गया, ये हो गया actual, right. Column labels will be predicted. ये हो गया predicted. predicted भी 1 0 होगा. ओके, नाउ ये मैट्रिक्स फिर अंदर ये जो वैल्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, ये होंगे हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर फॉर विच द एक्चुअल वाज 1 एंड यू प्रेडिक्टेड 1. कितने ऐसे, एक है. सिमिलरली ये जो है, कितने ऐसे ऑब्जर्वेशंस है जहां पे एक्चुअल 1 है और आपने 0 प्रेडिक्ट किया है, 2. कितने ऐसे ऑब्जर्वेशंस है जहां पे एक्चुअल 0 है और आपने 1 प्रेडिक्ट किया है, 0. कितने ऐसे ऑब्जर्वेशंस है जहां पे एक्चुअल 0 है और आपने 0 प्रेडिक्ट किया है, 12. तो ये जो मैट्रिक्स बना इसका नाम है कंफ्यूजन मैट्रिक्स. इसको कंफ्यूजन इसलिए बोलते हैं, ये दिखाता है कि मॉडल कहां पे कंफ्यूज हो रहा है. ठीक है, क्लियर. व्हाट इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स? इट इज बेसिकली क्रॉस टैप बिटवीन व्हाट यू एक्चुअली प्रेडिक्टेड एंड व्हाट इज एक्चुअली प्रेजेंट, है ना. तो ये जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, डू यू एग्री कि मैं अगर कट ऑफ को चेंज करता हूं ये नंबर्स चेंज होंगे, है ना. तो कट ऑफ को अगर मैं 0.5 के जगह पे 0.3 कर दूं तो ये नंबर्स थोड़े चेंज हो जाएंगे, है ना. तो रिमेंबर अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज मैप्ड टू अ पर्टिकुलर कट ऑफ. एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक पर्टिकुलर कट ऑफ के लिए बनता है, ये यूनिवर्सल नहीं है. कट ऑफ चेंज करोगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स चेंज होता जाएगा. क्लियर. ओके, नाउ अभी थोड़ा टर्मिनोलॉजीज पे आते हैं, राइट. ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं पूरा कॉपी करता हूं और इसका जो 4 सेल्स है ना, हर सेल का एक नाम है. नाम ये है, ये सेल को जो है इसको बोलते हैं ट्रू पॉजिटिव. ट्रू पॉजिटिव मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक्स का टर्मिनोलॉजी है. 1 इज यूजुअली पॉजिटिव, 0 इज नेगेटिव. मतलब इलेक्ट्रिकल में अगर सिग्नल जाता है या करंट है तो उसको 1 बोलते हैं, नहीं है तो 0 बोलते हैं. ठीक है, तो ट्रू पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव आपने प्रेडिक्ट किया है और वो ट्रू है. दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी फॉल्स नेगेटिव. आपने नेगेटिव प्रेडिक्ट किया है वो फॉल्स है. दिस विल बी फॉल्स पॉजिटिव, दिस विल बी ट्रू नेगेटिव, है ना. क्लियर. ट्रू पॉजिटिव कंफ्यूजन मैट्रिक्स में 4 सेल्स हैं, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव. 4 सेल्स हैं. क्लियर. ओके, नाउ अभी अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज एक्यूरेसी, मेरे को ये टर्मिनोलॉजीज यूज करके बताओ. व्हाट इज एक्यूरेसी? नो, एक्यूरेसी कैसे मेजर करोगे? टेल मी द फॉर्मूला फॉर एक्यूरेसी. It is TP divided by TP plus FM. No, for accuracy is TP plus TN. 0 के केस में भी तो आप एक्यूरेट ही हो. TN is also your accuracy ना. ट्रू नेगेटिव मतलब भी तो आप ट्रू हो, आप एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर रहे हो. सो these diagonals are where you are accurate, है ना. तो diagonals divided by total, ये आपका एक्यूरेसी हो गया, है ना. ओके,
All of you are clear on this? Okay. Then एक दूसरा टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी क्या है? सेंसिटिविटी है कि जितने पॉजिटिव्स थे, पॉजिटिव्स मतलब 1, जितने एक्चुअल वंस थे उसमें से कितनों को आपने 1 बताया. टोटल जितने 1 थे उसमें से कितनों को आपने एक्यूरेटली डिटेक्ट किया. सो दैट विल बी, नहीं 1 यहाँ पे है. डेफिनेशन वाइज व्हाट विल दैट बी? ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव पल्स प्लस false negative, है ना? So this is sensitivity. Clear? हम ये टर्मिनोलॉजी डिफाइन कर रहे हैं, बाद में यूज करेंगे इसलिए, ठीक है? तो डेफिनेशन समझना इंपॉर्टेंट है. सेंसिटिविटी का ऑपोजिट है स्पेसिफिसिटी. स्पेसिफिसिटी जस्ट ऑपोजिट है. जितने नेगेटिव थे, नेगेटिव मतलब 0, उसमें से कितनों को आपने नेगेटिव बताया, वो क्या हुआ? ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव. ये हो गया स्पेसिफिसिटी. ठीक है? इसके रिलेटेड 2 और टर्म्स हैं. एक का नाम है प्रिसिशन, दूसरे का नाम है रिकॉल. ठीक है? प्रिसिशन क्या है? प्रिसिशन मतलब आप जिसको 1 बोल रहे हो उसमें से कितने एक्चुअली 1 है. ये उल्टे तरीके से देख रहे हैं. पहले एक्चुअल के बेसिस पे देख रहे थे, अभी मैं बोलूंगा आप जितने को 1 बोल रहे हो उसमें से कितने एक्चुअली 1 है. इट विल बी ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव. ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव भी दोनों को आपने 1 बताया है ना, उसमें से ट्रू कितने हैं? ट्रू पॉजिटिव, है ना? रिकॉल जस्ट उल्टा है. जितने को आपने नेगेटिव बताया है उसमें से कितने एक्चुअली नेगेटिव है. सो इट विल बी ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, है ना? ओके. नाउ ये जो 5 टर्मिनोलॉजी है इसमें कोई भी डाउट है? ये आगे बहुत यूज आने वाले हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूं. कोई भी डाउट है? सिंपल है. नाम थोड़ा याद रखना डिफिकल्ट होगा, मेरे को भी मतलब 1-2 साल पहले ही याद हुए हैं, पर सेंस आप समझ रहे हो ना. बेसिकली ये जो है ना, ये जो 2 मेजर है इसमें हम देख रहे हैं जो एक्चुअल है उसमें से कितनों को आप सही बता रहे हैं, और ये जो मेजर है, ये 2 मेजर में आप देख रहे हैं आप जो बता रहे हो उसमें से कितना ट्रू है ना? do you agree with that? ये बस याद रखो. एक this is the difference between these two. now ये यूज कहां आने वाले हैं? ये हम अभी यूज करेंगे कट ऑफ डिटरमिन करने के लिए. आपका मॉडल अगर बहुत ज्यादा एक्यूरेट है तो सेंसिटिविटी क्या होगा? हाई या लो? आपका मॉडल एकदम स्पॉट ऑन है, मतलब सब कुछ सही बताता है, तो सेंसिटिविटी क्या होगा? हाई होगा. हाई. आपका मॉडल अगर एक्यूरेट है तो स्पेसिफिसिटी क्या होगा? लो होगा. ठीक है? स्पेसिफिसिटी लो होगा, हाई होगा, दोनों हाई होगा. सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी दोनों हाई होंगे. आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इक्वली करेक्ट बताओगे ना. ओके. नाउ अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं. टोटल मतलब ये टीपी प्लस एफएन प्लस एफपी प्लस टीएन टोटल ऑब्जर्वेशन. ओके. नाउ
हाँ, एक और चीज, आपका जो कट ऑफ है, आप अल्टीमेटली कट ऑफ डिटरमिन कर रहे हैं ना, आपका जो कट ऑफ है वो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 1। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 0। ठीक है, तो सपोज आपका कट ऑफ है 0, तो सेंसिटिविटी कितना होगा? हाँ, 1 होगा, क्योंकि 0 है तो सारे को आप 1 बता रहे हो ना, सबको 1 बता रहे हो, तो सेंसिटिव बिकम्स 1। स्पेसिफिसिटी क्या होगा? 0। सबको 1 बताओगे तो नेगेटिव तो किसी को नहीं बताओगे ना, तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। ओके, अगर आपका कट ऑफ 1 है तो सेंसिटिविटी क्या होगा? 0। स्पेसिफिसिटी क्या होगा? 1। ये क्लियर है? ओके, तो अगर मैं एक प्लॉट करूं जहां पे एक्स एक्सिस में मैं कट ऑफ लूं, ठीक है, और वाई एक्सिस में मैं लूं सेंसिटिविटी, तो कैसे दिखेगा? ये कर्व ऐसे दिखेगा ना, मतलब 0 to 1 के बीच में ऐसे नीचे जाएगा। अगर मैं स्पेसिफिसिटी लूं तो कर्व कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, है ना? योर आइडियल कट ऑफ इज द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस क्रॉस ईच अदर। ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, दैट इज द पॉइंट विच इज द आइडियल कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे सेंसिटिविटी भी जितना हाई हो सकता है उतना हाई है, स्पेसिफिसिटी भी जितना हाई हो सकता है उतना हाई है। Do you agree with this? ओके, थोड़ा हेवी हो रहा है तो आप बताओ मेरे को, आई विल टेक इट स्लो। मेरे को थोड़ा एक्सप्रेशंस देख के थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ऑनलाइन से तो कोई आवाज ही नहीं आ रहा है। पता नहीं, थोड़ा तो कॉन्सेप्ट we need to see again and again. ओके, सो लेट्स टेक अ स्टेप बैक, ठीक है? तो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग ना, आपके इंटरेस्ट में ये है कि मेरे को बताओ, ठीक है? तो आपको मैक्सिमम लाइक्लीहुड तक समझ में आया था, वो वहां तक आ गया था, ठीक है? अभी आप मैक्सिमम लाइक्लीहुड करने के बाद आपका आउटपुट क्या है? प्रोबेबिलिटी आया है ना? ये क्लियर है सबको? अभी बिजनेस को क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी तो नहीं चाहिए ना, उसको 1-0 चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी से 1-0 जाने का रास्ता क्या है? अपरेंटली 4 रास्ता है, ठीक है? एक, आप 0.5 ले लो कट ऑफ, उसमें अजम्पशन आप ये कर रहे हो कि दोनों इवेंट्स इक्वली लाइकली है, तो ही 0.5 कट ऑफ जस्टिफाइड है। दूसरा, आपका जो मन है वो ले लो, मतलब कुछ भी ले लो, ठीक है? तीसरा जो है, यहाँ पे लॉजिक ये है कि आपका जो बेसलाइन प्रोबेबिलिटी है उससे अगर आपका प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, then you should classify that as 1, because that observation is more likely to become 1 than any average observation, है ना? ओके, फोर्थ वन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स हम यूज करते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है? आप अगर एक कट ऑफ पकड़ लो तो उस कट ऑफ के बेसिस पे आप 1 और 0 प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर आपने प्रेडिक्ट किया तो कुछ केसेस में आप करेक्ट होंगे, कुछ केसेस में आप गलत होंगे, राइट? गलत आप 2 तरीके से हो सकते हो, राइट भी आप 2 तरीके से हो सकते हो। राइट आप कैसे हो सकते हो? एक, y1 है, आपने 1 बताया, ये राइट है। y0 है, आपने 0 बताया, ये भी राइट है। गलत आप हो सकते हो, y1 है, आपने बताया 0, है ना? और दूसरा गलत, y0 है, आपने बताया 1। तो ये यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स में दिखाया जाता है कि आपका मॉडल कंफ्यूज कहाँ पे हो रहा है।
एक्चुअल आपके डेवलपमेंट डेटा से आ रहा है, पूरा एक्सरसाइज डेवलपमेंट डेटा पे हो रहा है। हाँ, तो अगर आपका वाई मेंशन नहीं है, डेवलपमेंट डेटा में क्या होता है, वाई मेंशन होता है ना, तभी तो मॉडल बना पाते हो, तो वाई वहां पे मेंशन होगा। ठीक है, अगर वाई मेंशन नहीं है तो ऑब्वियसली आप मॉडल ही नहीं बना पाओगे। तो वाई मेंशन है, उसके बेसिस पे आपने प्रेडिक्ट किया एंड देन यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ एक्यूरेट यू आर। ठीक है, तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है उसके हर सेल को एक नाम दिया गया है जस्ट टू मेक दीज फॉर्मूलाज इजीली इंटरप्रेटेबल। तो एक है ट्रू पॉजिटिव जहाँ पे एक्चुअल 1 है, प्रेडिक्टेड 1 है। दूसरा है ट्रू नेगेटिव जहाँ पे एक्चुअल 0 है, प्रेडिक्टेड भी 0 है। दूसरा है फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव को आप ऐसे इंटरप्रेट करो, आपने बताया है नेगेटिव और वो एक्चुअल 1 था। फॉल्स पॉजिटिव इज आपने बताया पॉजिटिव पर आप फॉल्स थे, मतलब एक्चुअल 0 था। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आइडियली आपको अगर कट ऑफ चूज करना है, आपका कट ऑफ ऐसा होना चाहिए जो दिस सेल एंड दिस सेल को मैक्सिमाइज करे, क्योंकि यही आपका एक्यूरेट है ना। तो इसको मैक्सिमाइज कर रहे हो मतलब क्या है, ये दो सेल्स को कम कर रहे हो ना। टोटल ऑब्जर्वेशन तो सेम है ना, दो बढ़ेंगे तो कुछ तो कम होगा कहीं से। तो ये क्वांटिफाई करने के लिए हमने एक रेशियो निकाला है, दो, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी क्या बताता है कि आपका जितने एक्चुअल 1 थे उसमें से कितनों को आपने 1 बताया है। तो बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ दिस लाइन। ये जो लाइन है ना, ये ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव है। तो ये अपर लाइन का रेशियो है, नीचे का रेशियो है स्पेसिफिसिटी, ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। कौन सा सेंसिटिविटी? ट्रू पॉजिटिव बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, मतलब जितने एक्चुअल 1 थे उसमें से कितनों को आपने 1 बताया है। स्पेसिफिसिटी जस्ट उसका ऑपोजिट है, जितने 0 थे उसमें से आपने कितने को एक्चुअली 0 बताया है। ठीक है, तो अगर आपका मॉडल को एक्यूरेट होना है तो सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी दोनों को ज्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर ये तो कोई थ्योरी नहीं है ना, इसमें हम क्या करेंगे ना, इसमें हमको पता है कि हमारा कट ऑफ 0 और 1 के बीच में है, तो हम 0 और 1 के बीच में ना ऐसे बहुत ज्यादा वैल्यूज निकालेंगे जिसको हम ट्राई आउट करेंगे। 0 और 1 के बीच में विल टेक आउट 1000 वैल्यूज। हर वैल्यू के लिए वी विल कैलकुलेट सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। तो उसके बाद हमको एक प्लॉट मिल जाएगा। ये प्लॉट में जहां पे सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी का लाइन इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज माय कट ऑफ, क्योंकि यहां पे दोनों ज्यादा है। दोनों ज्यादा है मतलब क्या है, आप जितने 1 है उसमें से जितना ज्यादा आप एक्यूरेट हो सकते हो आप बता रहे हो, जितने 0 है उसमें भी जितना एक्यूरेट हो सकते हो उतना हो रहे हो। ठीक है, दिस इज द वे टू चूज द कट ऑफ। इसमें एक बिजनेस कैवियट है। कैवियट ये क्या है, ये कट ऑफ पे आप एज्यूम कर रहे हो कि आपका कोई क्लास बायस नहीं है। क्लास बायस मतलब आप 0 और 1 दोनों को डिटेक्ट करना चाहते हो, ये एज्यूम कर रहे हो ना। इसीलिए सेंसिटिविटी भी आपने मैक्सिमाइज किया है, स्पेसिफिसिटी भी आपने मैक्सिमाइज किया है। आप 0 और 1 के बीच में बायसनेस आपका नहीं है। ठीक है, पर बिजनेस में बायसनेस होता है। बिजनेस इज नॉट अनबायस्ड टुवर्ड्स आउटकम्स, इट इज बायस्ड। एग्जाम्पल, अगर आप एक डायग्नोस्टिक सेंटर चलाते हो, ठीक है, जिसमें आप टेस्ट करते हो मलेरिया का, ठीक है, तो आप अगर किसी बंदे का मलेरिया है, उसको आपने नॉर्मल बता दिया है, ठीक है, और एक बंदे का मलेरिया नहीं था, उसको आपने मलेरिया बताया है, ठीक है,
दोनों का कॉन्सिक्वेंस सेम है क्या? अगर मलेरिया है उसको नहीं बताया ना, वो मरेगा पक्का। और जिसका मलेरिया नहीं है उसको मलेरिया आपने बता दिया, 1-2 डोज लेगा तो कुछ होगा नहीं उसका, वो जिंदा रहेगा ना। तो कॉन्सिक्वेंसेज आर डिफरेंट। सो बिजनेस में भी ना डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेज अलग अलग होते हैं, तो दे हैव क्लास बायस। तो यहाँ पे अगर मैं एक डायग्नोस्टिक सेंटर चला रहा हूँ, मेरा क्लास बायस है टुवर्ड्स डिटेक्टिंग मलेरिया। मैं जितना ज्यादा हो सके मलेरिया को डिटेक्ट करना चाहूंगा, विच बेसिकली मीन्स माई ओनली इंटरेस्ट इज इन इंक्रीजिंग ट्रू पॉजिटिव, आई डू नॉट केयर अबाउट ट्रू नेगेटिव। 1-2 को अगर मैंने गलत भी कर दिया तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइडियली मेरे कट ऑफ कितना होना चाहिए? 0। अगर आपने 0, और आपको मतलब फॉर योर इंफॉर्मेशन जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है ना, सारे प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं, तो वहां पे कट ऑफ एक्चुअली यूज होता है, ठीक है। तो अगर मैंने 0 कट ऑफ ले लिया तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? सारे को आप बताओगे मलेरिया है ना, तो आपका डायग्नोस्टिक सेंटर चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो आप 0 नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें विल हैव टू टेक अ जजमेंट कॉल, तो उस पर हम आएंगे। तो यू अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रॉब्लम ना, कि आपका क्लास बायस है, पर ऐसे भी नहीं कर सकते हो जिस साइड पे आपका बायस है उसी में सबको प्रेडिक्ट कर दिया, ठीक है। अभी दूसरे एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप जब एयरपोर्ट में जाते हो, आपका बैग्स वगैरह स्कैन होता है। क्यों स्कैन करते हैं? कि आप कोई कॉन्ट्राबैंड या आर्म्स लेके नहीं जा रहे हो, ठीक है। यूएस में क्या होता है? यूएस में जब आप इमिग्रेशन करते हो ना, वो आपको एक स्कैन से गुजारता है, ठीक है। उस स्कैन में अगर उसको लगा कि आप कुछ कैरी कर रहे हो, तो आपको ले जाके वो मतलब प्रॉपरली सर्च करेगा, मतलब स्ट्रिप विप करके पूरा सर्च करता है, ठीक है। तो उसमें कैच क्या है कि अगर आपको उसने हैरस किया, मतलब आपको पूरा कपड़ा वपड़ा उतार के सर्च करेगा वो, तो यू दिस इज बेसिकली हैरेसमेंट ना। तो यू कैन गो आउट एंड सू द एयरपोर्ट अथॉरिटी, उनका जो होमलैंड सिक्योरिटी होता है उनको आप सू कर सकते हो, ठीक है। तो आइडियली अगर आपको टेररिज्म या जो भी है मतलब स्टॉप करना है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबको एकदम कपड़ा वपड़ा उतार के सर्च करना चाहिए। तो वो करोगे तो आपको क्या होगा, इतने केसेस आप पे होंगे तो आपका बंद हो जाएगा एजेंसी, है ना। तो आपको आइडियली क्या करना चाहिए? आपको आइडियली you should be able to detect people who are actually carrying those arms, right? And only take them to for that detailed search. So ideally, in that case, you should be maximizing your precision. Precision क्या है? जितनों को आप पॉजिटिव बोल रहे हो वो पॉजिटिव है ना। तो मैं आपको कुछ ऑल्टरनेट सिनेरियोज बताया जो एक्चुअल रियल लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे, पर फॉर दिस कोर्स, ये कोर्स के लिए वी आर डूइंग एकेडमिक एक्सरसाइज, सो वी विल एज्यूम कि आपका कोई क्लास बायस है नहीं, ठीक है। तो हम कट ऑफ सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी से ही बनाएंगे, पर आप जब प्रैक्टिस एक्चुअल बिजनेस केसेस पे जाओगे आपको हमेशा वहां पे क्लास बायस दिखेगा, ठीक है। ओके, अभी आप बताओ कोई क्वेश्चन है क्या? ओके, ठीक है। तो सर एक क्वेश्चन है सर, ये जो प्रेडिक्टेड टेबल बनाया ना जिसमें आपने 1 2 0 12 लिया था, ये एक बार वैल्यू बताएंगे सर 12 और यहाँ से लिया है, यहाँ से ये 12 है ना, ये राइट 12 है जितने के लिए 0 है और हमने 0 बताया। राइट There are 0 people for whom the actual is 0 and I predicted as 1. There is no such people. राइट There is 1 person where the actual and the predicted are both 1. राइट There are 2 people where the actual is 1 and I have predicted as 0. ओके ठीक है। Okay, अभी I will not go with the next concept right now. अभी थोड़ा heavy हो रहा है, तो I'll stop here. अभी आप बताओ कि आपको कोई question है on whatever we have covered.
सर जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल है, we could only use that when my y is only two categories, 0 and 1, right? Yes, binary. If we have more than one category, is there any उस पे method? हम आएंगे, उस पे हम आएंगे। अभी Okay. दो कैटेगरी को समझ लेते हैं, उसके बाद ज्यादा कैटेगरी पे जाएंगे। Okay. यूनिवेरिएट मतलब नहीं, लॉजिस्टिक में बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, इट मे नॉट बी यूनिवेरिएट। हाँ, अब सॉरी, आप क्या बता रहे थे? डायगोनल्स हैं, डायगोनल को ऐड करोगे, टोटल से डिवाइड करोगे। 13 डिवाइडेड बाय 16, हाँ 13 डिवाइडेड बाय 15 ऑब्जर्वेशंस है ना, एक तो हेडिंग है ऊपर। क्या हो जाएगा? हाँ, ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 हो जाएगा। हाँ, ओके, क्लियर है? कूल। अभी 15 मिनट बाकी है, तो मैं आपको और एक बिजनेस सिनेरियो देता हूँ, ठीक है, जो एक्चुअली आपको देखने को मिलेंगे। आप जब मॉडल बनाते हो ना, तो व्हाट यू विल सी इज the number of cases where y is equal to 1 is much lower than number of cases where y is equal to 0. कोई भी बिजनेस केस ले लो, डिफॉल्ट का ले लो, नंबर ऑफ डिफॉल्ट्स विल ऑलवेज बी लोअर देन नॉन डिफॉल्ट्स। प्रोपेंसिटी मॉडल ले लो, जहां पे आप बता रहे हो कि एक कस्टमर एक प्रोडक्ट खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, तो उसमें जितने लोग खरीदेंगे दैट इज मच लेसर देन जितने लोग नहीं खरीदेंगे। कोई भी प्रोडक्ट ले लो, राइट? कोई भी बिजनेस केसेस में number of y equal to 1 is much lower than number of y equal to 0, ठीक है? Let's say कि आपका प्रोपोर्शन ऐसा है, which might be the actual case, मतलब ऐसा प्रोपोर्शन हमेशा देखने को मिलता है कि y is equal to 1, इतने ऑब्जर्वेशंस है 2000, सॉरी y equal to 1 ऑब्जर्वेशंस है 20, ठीक है? y is equal to 0, ये एक्चुअल का बता रहा हूं, ठीक है? y equal to 0, इतने ऑब्जर्वेशंस है 2000, ठीक है? अभी मैं आपको एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स दिखाता हूं, आप बताओ कि आपका मॉडल एक्यूरेट है कि नहीं। तो टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है? 2020 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? इसमें एक्यूरेसी कितना आएगा? एक्यूरेसी आएगा 2000 डिवाइडेड बाय 2020, है ना? एक्यूरेसी 99% है, तो आपका मॉडल तो बहुत सही बना है ना? नहीं, क्यों? हाँ, तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना ये दिस टाइप ऑफ सिनेरियोज आर नोन एज अनबैलेंस्ड केसेस। अनबैलेंस्ड केसेस मतलब जहाँ पे y इक्वल टू 1 इज फार लोअर देन y इक्वल टू 0। तो ये केसेस में हम क्या करते हैं? वी विल ओवर सैंपल y इक्वल टू 1 केसेस, उसको ओवर सैंपल करेंगे। ओवर सैंपल मतलब आपके पास 20 है ना यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, वो 20 ऑब्जर्वेशन को हम 100 बार रिपीट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा 2000, है ना? और ये भी हो गया 2000। 20 को 100 बार रिपीट करोगे 2000 हो जाएगा। टोटल ऑब्जर्वेशंस बन गए अभी 4000। इस पे अगर आप मॉडल बनाओगे ना, तो कभी ऐसा सिनेरियो नहीं आएगा, क्योंकि मॉडल हमेशा इजी वे लेता है ना, उसको क्या करना है? एक्यूरेसी बढ़ाना है। तो अगर और 20 और 2000 आपने दिया, वो सबको 0 बोल देगा। हाँ, मतलब मैं बता रहा हूं कि अगर ये सिनेरियो, अगर ये आपका डेटा का कॉन्फ़िगरेशन है, आपका जो लॉजिस्टिक का जो एल्गोरिदम है, उसको करना क्या है? एक्यूरेसी बढ़ाना है, प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालना है ताकि एक्यूरेसी बढ़े। उसको ये मतलब नहीं है कि y इक्वल टू 1 को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना है। तो प्रोबेबिलिटी इट विल टेक द लो हैंगिंग फ्रूट। लो हैंगिंग फ्रूट मतलब सबको वो लो प्रोबेबिलिटी देगा, है ना? ताकि फिर भी एक्यूरेसी 99% आया ना। तो इस सिनेरियो में अगर आप मॉडल बना रहे हो, आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स ऐसे दिखेगा।
तो इस सिनेरियो को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो माइनॉरिटी क्लास है उसको ओवर सैंपल करते हैं, उसके ऑब्जर्वेशंस को बार बार रिपीट करते जाते हैं। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो दिस सिनेरियो विल नेवर हैपन। ठीक है, ये भी अगेन दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स पर से, पर these are things that you will pick up when you work on real business problems. ठीक है, चलो ओके, एनी क्वेश्चन? ओके कूल। ये जो मैं आपको जो ट्रिक्स बता रहा हूँ ना, ये आप लिख लिया करो, क्योंकि ना आपके मटेरियल में नहीं होगा, ना आपको इंटरव्यू से पहले कोई बताएगा। ये इफ यू कैन शो दिस काइंड ऑफ फ्लेयर्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू ना, तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि आप एक्चुअली काम किए हो, नहीं तो बुक पढ़ के तो कोई भी आ जाएगा। तो दिस काइंड ऑफ थिंग जस्ट राइट इट डाउन, जब आप इंटरव्यू जाओगे एक आध बार देख लेना तो अच्छा होगा। ठीक है, cool. So let's stop here unless you have any questions. So do we have any assessment on linear regression? No, there is no assessment that will be given on any algorithm. What you are expected to do is जो केस स्टडी हमने दिया है उस पे आपको इंडिपेंडेंटली और एक मॉडल बनाना है अपने साइड से। Make sense? Okay, so